Hi everyone, let us continue with the 27th pauri of Japji Sahib. सो दर केहा सो घर केहा जित भय सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परिस्यो कही अन केते गावन हारे. Where is that door? Where is his abode? Where he dwells and overlook his creations. Infinite sounds are ringing, and infinite are the players. Infinite are the singers, and limitless the melodies they sing. वह द्वार कहाँ है, वह घर कहाँ है, जहाँ बैठकर तुम सबकी संभाल करते हो. अनेक नाद बज रहे हैं अहर्निश, असंख्य बजाने वाले हैं, अनंत राग रागिनियां हैं, असंख्य गायक हैं. Nothing in existence is clearer than music. Existence sings from every corner. God is somewhere hidden behind the music. नानक गाते हैं उसकी धुन में, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मीरा एक तारा बजाती हुई खोई हुई है उसके गीतों में. There are many examples. To be absorbed in the song is the thread that leads to him. The door is an internal and secret door that devotees have been searching for throughout the ages. There are two types of doors, in fact. One that opens toward the sensational phenomenal world, and the other that open to the dwelling place of the Almighty. Guru Nanak, in his spiritual ecstasy, first walked through that door to the divine when he experienced the Jal Samadhi. What he felt, he expressed in Japji Sahib. यह वह अमृत है जो जल समाधि के तत्पश्चात नानक के मुख से झरा. He says, Onkar is your door. When the music, the Onkar begins to sound within you, when you lose yourself in the sound, you stand in the footsteps of God at his heavenly abode. गावे तहनो पौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे. Water, fire and wind sing your glory. The god of death sings at your door. Chitra and Gupt, the angels of consciousness and subconsciousness, sing your splendor. पानी, अग्नि और पवन तेरे यश गा रहे हैं. धर्मराज तेरे द्वार पर बैठकर गीत गा रहे हैं. चित्र और गुप्त जो पाप पुण्य का हिसाब रखते तेरी ही महिमा गा रहे हैं. Each action has a reaction. We can't escape from what we do. Our actions are being judged in his dwelling. Some of our actions are in line with dharma and truth, bringing us close to him, and some others make us far from him. Dharmraj and all others sing at his door because this is hukum, how the word works. In another way, Nanak means to say that all deities sing at his door by vanishing their seriousness. Seriousness, in one sense, means being egoistic. Egolessness and rejoicing is the characteristic of a true religion. Don't be lost, don't be dry. नानक कृष्ण एक हंसते नाचते उत्सव मनाते धर्म की बात करते हैं.
जब आत्मा परमात्मा के साथ बहती तो आनंद ही आनंद, हर पल उत्सव है। गावे ईश्वर बर्मा देवे सोहन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। Shiva, Brahma and the goddess acknowledge as owing their existence to you. Sitting on the Indra throne, Indra praises you with all deities with them. The celibates, the charity givers, the contented ones, and the great warriors sing your glory. शिव और ब्रह्मा जो तेरे सवारे हुए हैं तुझे गा रहे हैं। इंद्र अपने तख्त पर विराजमान देवताओं सहित तेरी स्तुति कर रहे हैं। सिद्ध लोग समाधि लगा तुझे गुण रहे, साधुजन चिंतन कर तुझे सलाह रहे हैं, वैरागी संतोषी महाबली योद्धा भी तुझे गा रहे हैं। Nanak simply means to say that all deities, sages sing at his door because he is the Vadda Sahib, the Supreme Master. You must have thought why Guru Nanak keeps on repeating the things. दो शब्दों में ही क्यों नहीं कह देते कि सब गा रहे हैं उसकी महिमा? Because he is in deep love with God. यह उनकी भाव दशा है। This emotional state signifies intense love. यह पुनरुक्ति प्रेम की अभिव्यक्ति है। Every time you want to tell him how much I adore you, how much I miss you, like a mother who wants to discuss about her kid only. Nanak is doing the same. He wants whole world to sing about him. क्योंकि परमात्मा ही परम आनंद है। God is the true ecstasy. उसके पार कहीं कुछ नहीं है। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीर्थ नाले, गावन जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खड मंडल वरपंडा कर कर रखे तारे। The learned ones reading scriptures and the great sages have been praising through the ages. Captivating beautiful women in the world acknowledge you. The 14 precious jewels and 68 holy places of pilgrimage acknowledge you. All the great warriors and brave ones acknowledge you, as do all the 4 life forms. The planets, galaxies, and cosmos created and supported in space by you sing about you. पंडित और महर्षि जो वेदों को पढ़ते हैं तुझे गा रहे हैं। सुंदर स्त्रियां जो हर जगह मन मोह लेती हैं तुझे गा रही हैं। तेरे पैदा किए हुए रतन 68 तीर्थ समेत तुझे गा रहे हैं। महाबली योद्धा व शूरवीर तेरी ही स्तुति कर रहे हैं। चारों खानों के जीव तुझे ही गा रहे हैं। सारी सृष्टि के सारे खंड तारामंडल जो तूने संतुलित किए हुए तुझे गा रहे हैं। Here Guru Nanak simply means to say whole world chants your melody. Whether it is a scholar or an enchanting woman or the warrior, all sing your glory. Whole universe is created by you only, so it's only you worth applaud and honor. Scholars, sages, even deities come from you. You are the source from which cosmos flows. कोयल के गीत हो या झरनों का संगीत, पास से होकर गुजरती हवा के सुर हो या हृदय की धड़कन, प्रतिपल तुम्हें ही गा रहे हैं। Existence sings his splendor. Flowers bloom for him, rivers flow for him. Everything is dedicated to him, to the Supreme Master. Thank you. That is all for today.